हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया पार्ट 1 गुजरात बोर्ड। ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए केडी एकेडमी को। तो शुरू करते हैं। हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। हमारा जो कल्चर है बहुत ही पुराना है लेकिन बहुत ही यूनिक है। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स। विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द 18 महापुराण, जहाँ पे एंशियंट एंड मिडिवल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म के बारे में लिखा गया है। And even it actually centered for the god विष्णु। विष्णु के ऊपर ही पूरा पुराण है एंड हिज अवतार, जो ऐसे कृष्ण गॉड है वैसे। उत्तरम यत्स्य मुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति ही। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है उस देश का नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। जो बाउंड्रीज हैं एक्सटेंड होती है फ्रॉम द हिमालयस इन नॉर्थ एंड टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। न्यू डिसेंडेंट्स यानी कि जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उसके पहले वाली जनरेशन यानी कि पुरानी, उनको बोलते हैं इंडियंस। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, भारतवर्ष, Bharatkhand, JAMBUDWIP and ARYAVARTA etc. words are used while taking resolution। कुछ resolution लेना है, कोई auspicious ceremony है तो ये सभी words use होते ही हैं। हमारी country gifted है, our country is gifted with natural boundaries। जो boundaries है it is very natural। Himalaya in the north and sea in the east, west and southern part। जो ईस्ट, वेस्ट एंड सदर्न पार्ट है वहाँ सभी जगह पे सी सराउंडेड है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity। mesmerize यानी कि used to attract। हमारी इतनी डाइवर्सिटी है कल्चर में तो मोस्टली दूसरे कंट्रीज यूज टू गेट अट्रैक्ट towards our culture by the Indian prosperity, Indian development and came to trade। इंडिया का जितना डेवलपमेंट हो रहा था तो पहले से ही हम लोग देखते हैं पोर्टुगीज है, डच है, ब्रिटिश है, तो ये सभी लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे ड्यू टू देयर प्रोस्पेरिटी एंड दे केम टू ट्रेड, सेटल्ड एंड मिंगल्ड दैट इज मिक्स्ड विथ इंडियन कल्चर। Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture। जो जैसे जैसे लोग इंटरचेंज, एक्सचेंज, आइडियाज एक्सचेंज होते रहे तो the people used to mingle with each other। cultures interchange होते गए। In this way, our heritage is transformed from generation to generation and is continuously progressing। और वो progressing भी है। लोकेशन एंड साइज की बात करें, इंडियाज लोकेशन एंड साइज, तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड्स 84 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड्स 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 degree east। It is divided by Tropic of Cancer 23.30 degree north
in almost 2 equal parts, जो आप देख सकते हो. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, ऑलमोस्ट वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. द अपर हाफ हैज अ टेम्परेट कूलर क्लाइमेट, यू कैन सी हियर. The upper half has a temperate cooler climate and the lower half has a tropical climate. Southernmost point की बात करें, the southernmost point of the Indian Union is known as Indira Point. However, actually वो पूरा submerge हो चुका था सुनामी में, that was in 2004. Southeast India में Andaman and Nicobar Island lie in the Bay of Bengal. In southwest, Lakshadweep Islands lie in the Arabian Sea. India is enormous in size, enormous, that is huge. As we have discussed, it is the 7th largest country in terms of landmass. Overall landmass या area की बात करें तो it's 7th largest country in terms of area. Total area of India is 3.28 million square kilometer. India also accounts global world level की compare करें तो it has approximately 2.4% area with a land boundary of 15,200 kilometer and coastal boundary that includes around 7,516 kilometer. When we see the outline of India on the map, हम लोग map में उनकी outline देखेंगे, we can easily identify the natural features like young fold mountains bordering the country. जहाँ पे जो borders में है तो mountainous regions बहुत है in the northern area, northwestern and northeastern borders of India. East-west stretch of India and the north-south stretch of India approximately measure the same, that is 3,000 kilometer. But east-west stretch is smaller than the northwest stretch. It is this huge distance between the eastern and the western ends of the country that cause a lag in the local time of the country. जो ये eastern and western ends of the country में जो lag है, lag यानी कि delay, उससे local time में भी delay होता है. Actually in India हम लोग यहाँ पे तो एक ही टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखें तो there is some difference in even the states that exist in India. अगर आपको सिंपल बताऊं तो there is a difference of time between Gujarat and Arunachal Pradesh, that is of 2 hours due to this lag that is being created between the two ends. Both their clocks show the same timing. Actual तो 2 hours का difference है, because India follows a standard time जिसे हम लोग बोलेंगे Indian Standard Time. अब Indian Standard Time की बात करें तो it is approximately 5.30, that is 5:30. 5.5 घंटे we are ahead, 5:30 hours we are ahead as compared to green mean time. ग्रीन मीन टाइम से हम लोग 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं. और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअली was started from 1st September 1947. और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is along longitude 82.30 degree east, or it passes through the city of Mirzapur in UP. Rich and the varied heritage. Varied यानी कि with variety. हमारा जो heritage है वो rich है and even varied. Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us as to the world. Indian culture have been there for trade oriented and peace loving. जो Indian culture है वो trade oriented है, even peace loving. Sat, Chit and Anand are realized from our Indian culture. सत यानी कि truth, सच्चाई. चित की बात करें,
चित यानी कि कॉन्शियसनेस, इवन वी कैन से अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग समझते हैं, एंड आनंद, आनंद यानी कि प्लेजर, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, दैट इज आनंद, वो हमारे कल्चर में दिखता है. बिसाइड्स दिस, इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different cultures of other country which came to India and settled here. They have accepted the values of non-violence. दूसरे जो लोग यहाँ पे आए हैं या दूसरा कल्चर कोई भी मिक्स हुआ है तो उन्होंने भी they have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. People right from the beginning of Indus Valley civilization till today अब तक have made our country rich and wealthy with their intellectuality, that is intelligence, ability, talent and skill. Innumerable, that is uncountable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture. Culture की बात करें एक simple definition तो culture क्या है? Culture is a sum of habits, values, customs, tradition and conduct of lifestyle of humans. That is culture, and we have literally very good culture. A culture that comprises, that shows, that realizes the value of Sat, Chit and Anand. That is truth, consciousness and bliss.